Yes, very good. Settle down in Shavasana, everybody. Good. The legs are together, hands at the sides at shoulder level, the palms are facing down. The first one, your legs are together and down. So we are going for Madrasan twisting. Twist your body and the lower part of your body. That means your legs are turning to the right and your head and neck to the left. And stay there for 10 counts. Stay there for 10. 1. In between, you have to breathe in and out normally. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, easy. 9, 10. Breathing in, straight हो जाइए. Yes. Breathing out, opposite side. yeah, the same one, opposite side. Your legs to left and your head and neck to the right. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathing in, straight ho jaye. Breathe out, relax. And now cross your legs. Your right leg over the left. Cross it at the ankle joint. Okay? Yeah. And the movements are same. Breathe in, breathing out. Your lower part of the body to the right and upper part of the body to the left. Stay twist nicely. Feel the stretch on the lower back and upper back. Deep breathe in, breathe out. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Go straight and breathing out, opposite side. Leg position the same, opposite side. Legs to the left, head and neck to the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in, go straight. Breathe out, relax your hands. Opposite side. And now your right leg down and your left leg up. The movements are same. Breathing out, yeah. Your right legs to the right and your head to the left. And stay there. Deep breathe in, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Come up and breathing out, opposite side. Your legs to the left, head and neck to the right. Deep breathe in, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Breathing in, come straight, breathe out, relax your legs. And now lift your right leg up, place your right heel on the left toes. आपकी right heel आपकी left toes के ऊपर रखिए. Movement will be same. Okay, इस position से हमको दोनों साइड करना है. Twist your body, your legs to the right, head and neck to the left. Feel the stretch and stay there. With 1, 2, 3, easy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathing in, go straight. Breathing out, opposite side. Same here. Right leg is up and twist your body, lower body to the left, upper body to the right. Deep breathe in, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Breathing in,
come straight, breathing out, right leg down, and now your left leg up, left heel on your right toes. Yes, the movements are same. Breathe out, your lower body to the right and your upper body to the left. Feel the stretch and relaxation at the back. Deep breathe in, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Easy. 6, 7, 8, 9, 10. With breathing in, come straight and breathing out, opposite side. Your legs to left and your head and neck to the right. Deep breathe in, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathing in, come up. Breathing out, relax your legs. 2 times deep breathe in, breathe out here. And now with folded right leg, fold your right leg, place your right foot near the left knee. In this position, we have to twist on both sides. First, your legs to the right and head to the left. Yeah, your right leg is folded and you're twisting your lower body to the right. Deep breathe in, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Breathing in, come up. Same, your right leg is folded and you're twisting your lower body to the left and your head and neck to the right. Deep breathe in, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Breathing in, go straight and breathing out, relax your right leg and fold your left leg. Breathing out, twist your body, your lower body to the right and upper body to the left. Feel the relaxation at the back. Deep breathe in, breathe out. 1, 2, easy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathing in, come straight. Breathing out, your legs to the left, head and neck to the right. Stay with deep breathing, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Breathing in, just come up. Breathing out, just relax your legs. And the next one, with both legs folded. दोनों पैर fold कीजिए. The movements are same. Your legs to the right and head to the left. Twist nicely and your both side shoulders are down. Do not lift your shoulders up. Try to bring your knees down and knees are one on the other. Deep breathe in, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Breathing in, go straight, slowly, and breathing out, legs to the left, and your head and neck to the right. Deep breathe in, breathe out. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Breathing in, just come up and your legs are apart, your knees apart. Yeah, just bring your feet apart. Folded leg only. We'll be going for the same movement with knees apart. Okay? Breathing out, twist your body and bring your both knees to the right. And this time your both knees are down. आपकी दोनों पैर right side turn कीजिए. Yes, very good. Head to the left. Deep breathe in, breathe out. Stay. 1, 2, easy. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Breathing in, just come straight. Breathing out, opposite side, opposite side. Good, stay there. 1, legs to left, head to right. Deep breathe in, breathe out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Breathing in, come straight. Breathing out, relax your legs and your hands with the body. 2 times. Deep breathe in, breathe out. We go for Setu Bandhasana now. Bring your heels closer to the hips. Catch hold your ankles or else place your palms down. Breathing in, lift your hips up as much you can. Lift up as much you can. Deep breathe in, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Breathing in, your hips down. Breathe out. Relax your hands and your legs. 2 times. Deep breathe in, breathe out. And then Pavan Muktasana. Breathing out. Press your both knees to the chest. Breathe in, head up. Breathing out, your forehead to the knees. In case of any neck pain, you can keep your head down only. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Very good. Breathing in, your head down. Breathing out, relax your hands and your legs. Yes, 2 times. Deep breathe in, breathe out. And next one, we go for Tadasana in lying down position. So you have to breathing in, bring your hands upward. Maybe you can drag your hands on side, interlock your fingers over the head. Stretch your hands up and toes down. अपनी toes को नीचे की तरफ stretch कीजिए और hands को up stretch कीजिए. Deep breathe in, breathe out. 1, 2, take under. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Breathing out, hands sideward downward and पैर को भी relax कीजिए. So अभी इसके बाद में कुछ एक्सरसाइज नी स्ट्रेंथनिंग के लिए करेंगे. ये वाली एक्सरसाइज से आपको नीज का जो लिगामेंट है साइड मसल से स्ट्रांग हो जाता है. अगर आपकी एंकल की पेन भी थोड़ा ठीक हो जाता है. ठीक है. हाथ आपको साइड रखना है तो साइड और हेड के पीछे रखना है तो हेड के पीछे रखिए एज यू कंफर्टेबल. So first one, you have to simply stretch your toes forward. Keep your head straight and both feet backward. पैरों को पीछे की साइड स्ट्रेच कीजिए. Front. Yeah, we hold for 5 now. 1, 2, 3, 4, 5 and backward. अच्छे से स्ट्रेच करना. प्रेशर आपकी कफ मसल्स, एंकल जॉइंट और नी जॉइंट में भी होने का. 3, 4 and 5. Okay, the next one, you can lift your right leg up to 30 degree. Okay, right leg to 30 degree and now stretch your toes forward. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5 and now backward. 1, stretch your toes, right toes back, that means right feet back. 2, 3, 4, 5. One more round forward. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Backward. 1, 2, 3, 4, 5. Just go straight. Breathe out. Your right leg down and left leg up. Stretch your toes forward. आगे की साइड स्ट्रेच कीजिए. Head straight रखें. Deep breathe in, breathe out. 1, 2, 3.
stretch nicely, 4, 5, and backward. Backward अच्छे से press करना so that you get some tightening, feel on the knee joints, ankle joints, even including your core muscles. 1, 2, 3, 4, 5. Stretch forward. 1, 2, easy. 3, 4, 5. Backward. 1. Toes को पीछे stretch कीजिए. 3, 4, and 5. Just relax. Straight and breathe out. Relax. उसके बाद में right leg 60 degree. We'll do the same. Stretch your toes forward. Yes, stay. 1, 2, head straight रखिए. 3, 4, 5, and backward. 1, 2, 3, 4, 5. Forward. अच्छे से stretch करना. 1, head नीचे रखिए. 2, 3, 4, 5. Backward. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Right leg नीचे कीजिए और left leg को ऊपर उठाइए. Good. Forward. 1, 60 degree. 2, 3, 4, 5. Backward. Knee straight रखना है. Knees को ऐसे bend करके नहीं करना. Knees को straight करो. Backward. 1, 2, 3, 4, 5. Forward. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Backward. 1, 2, 3, 4, 5. Go straight. अब relax हो जाइए. And next your right leg to 90 degree. We'll do the same. Okay. Keep your knee straight. One knee right leg up to 90. Knee stretch और ऊपर stretch कीजिए. Stay for 5. 1, 2, 3, 4, 5. Backward. Keep your knee straight. 1, 2, 3, 4, 5. Upward. 1, 2, 3, 4, 5. Backward. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out. धीरे से रिलैक्स कीजिए. अभी लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए 90 डिग्री. गुड. स्ट्रेच अप. स्ट्रेच अप. टोस को ऊपर स्ट्रेच कीजिए. हेड स्ट्रेट रखिए. जैसे आप स्ट्रेच करते हैं आपकी जो स्ट्रेच का इफेक्ट आपकी पेट मसल्स तक, कोर मसल्स तक होने का. स्ट्रेच अप नाइसली. 2, 3, 4, 5. बैकवर्ड. बैकवर्ड. अच्छे से पीछे करना. काफ मसल्स में बहुत अच्छे स्ट्रेच होने का. 1, 2, 3, 4, 5. One more round up. 1, 2, 3, 4, 5. Backward. 1, 2, 3, 4, 5. Come up. Breathe out and relax. So ये दोनों पैर का एक साथ आपको 30-60 डिग्री में भी कर सकते हैं. हम 30-60 को स्किप करेंगे क्योंकि उसमें रखने में क्या आपको बैक में स्ट्रेस आता है. अगर आपको और करना है तो 30 डिग्री 60 डिग्री में आप एक चेयर ऐसे रख सकते हैं, उसमें रेस्ट करके ऐसे सेम मूवमेंट कर सकते हैं. अभी हम डायरेक्टली 90 डिग्री में जाएंगे. दोनों पैर 90 डिग्री तक ऊपर उठाइए. जिनको बैक में ज्यादा स्ट्रेस है वो फोल्ड करके स्ट्रेट कीजिए, बाकी सीधे नीचे से ऊपर. स्ट्रेच बोथ टोस आप. दोनों फीट ऊपर स्ट्रेच कीजिए. हेड स्ट्राइट रखिए, नीचे रखिए. ब्रीद इन ब्रीद आउट. 1, 2, 3, 4, 5. Backward. 1. Stretch nicely. पीछे के सिर अच्छे से कीजिए. 3, 4, 5. Forward. 1, 2, 3, 4, 5. Backward. 1, 2, 3, 4, 5. Just breathe out. सीधा नीचे कीजिए. अगर जिनको ज्यादा बैक का इश्यूज है फोल्ड करके नीचे कीजिए. Yes, 2 times deep breathe in, breathe out here. इसके बाद में एक और एक्सरसाइज है. Just turn to side everybody. Turn to side, take a pillow. साइड हो जाइए. अभी आपकी पैर को है ना यहाँ पे जो आपकी बॉडी से टाइस एल शेप टाइस से
कॉफ मसल्स की एरिया एल शेप में ले आओ। अब क्या करना, आपकी पिल्लो या तो कुशन है ना, दोनों नीज के बीच में रखिए। हो गया? गुड। यस, पिल्लो ढूंढ के नहीं जाना है, तो मैंने पहले से ही आपको बोला, आपको योगा स्टैप, पिल्लो, चेयर पास रखना। ओके, चलिए। सो अब क्या करना, अभी दोनों नीज से प्रेशर देना, उसको प्रेस कीजिए, मतलब दबाना। ठीक है? यस, प्रेस नाइसली नाइसली। 1 2 3 4 5। जस्ट ब्रीथ इन। राइट लेग को थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ये दो है रिलैक्स पोस्चर। 1 2 3 4 5। अगेन प्रेस, ऊपर से भी प्रेशर देना, नीचे से भी देना। अभी 10 काउंट्स रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जस्ट रिलैक्स। अब साइड चेंज कीजिए, साइड चेंज करके टर्न हो जाएगा। Okay, settled everyone? Good. Yeah, press, अच्छे से प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe in, just come up, relax. 1 2 3 4। Breathe out, press. Just press for 10 counts, okay? 1, press nicely, दोनों साइड से प्रेशर कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Breathe in, come up, stay there for 5. 1 2 3 4 5। अब रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स एंड कोबरा पोज में जाएंगे। We'll go for cobra pose, legs up together. Palms in the shoulder line. Breathing in, slowly rise your upper part of the body up. Just lift up as much you can. आपको हाथ सीधे करना है तो सीधे करके कीजिए, और बेंड रखना है तो बेंड रखिए। Deep breathe in, breathe out. 1, push your shoulders back. 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Very good. Breathing out, just calm down, धीरे से रिलैक्स हो जाइए। 2 times deep breathing, breathe out. Yeah, we'll go for Shalabhasana, Ardha Shalabhasana. Press your palms down at shoulder level and your chin down. Pressing your left toes down, lift your right leg up. Right leg को ऊपर उठाइए। Good. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathing out, right leg down and breathing in, left leg up and stay for 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathing out, left leg down and bring your both hands under the thighs. Make a fist and bring your hands, insert your hands under the thighs. Stretch your body forward, place your chin down. Breathing in, lift your both legs up. Both legs up, the knees are straight as much as possible. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good. Breathing out, just calm down. Relax your hands and your legs. Relax in any comfortable pose. And then next one is Dhanurasana. Hands with the body, legs together or slightly apart. Your forehead down. Fold your legs from back. Casual your ankles with respect to your hands. Breathing in, lift your both sides of the body up
Your head up, chest up, thighs and knees up. Stay there with deep breathing, 3 counts. 1, 2, 3, easy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Breathing out. Just calm down. Just calm down. Relax your hands and your legs. 2 times deep breathing, 3 out. So we go for some strengthening exercise for knees here also. You can fold your hands and you can rest your head on your arms, on your folded crossed arms. Okay? Yes. And now pressing the left down, lift your right leg up, stretch your toes backward, the downward, and stay. 1, 2, 3, 4, 5, and downward. 1, 2, 3, 4, 5. Downward again. 1, 2, 3, 4, 5. Upward. 1, 2, 3, 4, 5. Just relax. And opposite side, your left leg, stretch downward. 1, 2, easy. 3, 4, 5. Backward. 1, 2, 3, 4, 5. One more round. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Downward. 1, stretch nicely. 2, 3, 4, 5. Breathe out, relax. And now both legs down and stretch it back. 1, don't lift on the floor only, stretch it downward like this. 1, 2, 3, 4, 5. Just relax, breathe out and bring your toes down and press it down and stretch opposite side. Your heels down and toes forward. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out and toes downward. नीचे रखिए, नीचे की साइड स्ट्रेच कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. up. ये टोस डाउन, थोड़ा सा आगे ऐसे स्ट्रेच करके, ऐसे मत रखिए, इसको आगे जितना हो सकता है उतना स्ट्रेच कीजिए, फिर नीचे डिप कीजिए, फिर इसको और नीचे स्ट्रेच कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. Just relax. One more movement, and now lift up. If you're not able to lift your knees, that's okay. Keep your knees down, lift only your legs. If it is okay for you, lift up nicely. Stretch your toes downward. 1, 2, 3, 4, 5. And पीछे की side. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Back. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Just relax. 3 times deep breathe in, breathe out. Once you're relaxed, you can turn to side and sit down. दोनों पैर straight रखिए. Yeah, we do few knee exercises here. Yeah, everyone ready? Good. This is simply place your hands at the side, stretch your both toes forward, keep your head straight, stay for 5. 1, 2, 3, 4, 5. Backward. 1, 2. अच्छे से stretch कीजिए, अच्छे से. 3, 4, and 5. Forward. 1, 2, 3, 4, 5. Backward. 1, 2, 3, 4, 5. Just breathe out, relax. And the next one, you can have a soft cushion or a bottle under your right knee. इसको roll कीजिए, इसको right knee के नीचे रखिए ऐसे. Maybe you can use a turkey towel, or time being you can use a bottle
but check that it's very soft material. If you're going for a regular practice, check that it's a soft material like a turkey towel or a cushion and roll like this. Or time being, if you don't have anything, make a fist and keep your hands like this, okay? But that is not a permanent way to practice. If you're going for permanent practice, regular practice, have a soft material here. And your right leg is slightly up, and again, stretch your right toes forward. 1, 2, 3, 4, 5. Stretch back. एकदम अच्छे से स्ट्रेच करना है, ऐसे इजी मोड में नहीं रहना, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए. 1, very good. 2, 3, 4, 5. Forward. Stretch nicely. You could feel that stretch till your knees and even at the core muscles. 2, 3, 4, 5. Backward. 1, 2, 3, 4, 5. Just relax. Upside change. सेम आपकी जो कुशन है या तो टॉवल है, जो भी रोलिंग है ना, उसको लेफ्ट नी के नीचे रखिए, राइट को आराम कीजिए, लेफ्ट आर्म, अब इसको आगे स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच फॉरवर्ड. 1, 2, इजी, 3, 4, 5. बैकवर्ड. इसमें किसी को कुछ वीकनेस है, क्रैम्प भी आ जाएगा, कोई बात नहीं है. आप इसको क्रैम्प आता है तो 2 बार ऐसे ऐसे करके फिर पीछे कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. फॉरवर्ड. आप जैसे फॉरवर्ड स्ट्रेच करते हैं, किसी को मसल क्रैम्प जैसे यहाँ पे मसल पुल क्रैम्प जैसे फील आएगा. अगर इनकेस आपको ऐसे लगता है तो 1-2 बार ऐसे कुछ मूवमेंट आगे पीछे कीजिए. 2, 3, 4, 5. बैकवर्ड. 1, 2, 3, 4, 5. जस्ट रिलैक्स. अभी इसको दोनों नीज के नीचे प्लेस कीजिए. दोनों हील्स अप हो गया, दोनों को सामने स्ट्रेच कीजिए. 1, इजी. 2, 3, 4, 5. बैकवर्ड. 1, 2, 3, 4, 5. फॉरवर्ड. अच्छे से स्ट्रेच करना, आपको पूरे है ना अंदर से मसल को खींचना है. 1, 2, 3, 4, 5. बैकवर्ड. 1, 2, 3, 4, 5. Just breathe out, straight and relax. ये जो आपकी पिल्लो है ना, इसको दोनों नीज के बीच में रखिए. ये तो थोड़ा सा रोल कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही प्लेन ऐसे ही रखिए. यस. तो आप क्या करना, तो उसको ऐसे लाक लगाइए. जस्ट गिव सम प्रेशर. जो आप ये मटेरियल है ना, ये तो सॉफ्ट होने का, यहाँ पे वाटर बॉटल हाथ यूज ना करना. ओके, इसको है ना सॉफ्ट मटेरियल को यूज करना. प्रेस इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जस्ट ब्रीथ आउट, रिलैक्स. जैसे आप ब्रीथ प्रेस करते हैं ना, ब्रीथ इन आउट करना है, ब्रीथ को होल्ड नहीं करना. रेडी. अगेन इसको तो उसको है ना ऐसे लाक लगाइए, अदरवाइज आपको है ना इतना फोर्स नहीं मिलेगा. आपको ऐसे लाक लगाओ. अगेन प्रेस. 1, दोनों साइड से प्रेस करना. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जस्ट रिलैक्स. ब्रीथ आउट, रिलैक्स. रिलैक्स हो जाइए. ये सारे एक्सरसाइज है ना, आपको चेयर पर, सोफा पर बैठते हुए भी कर सकते हैं. अगर एक और एक्सरसाइज है, आपको चेयर पर बैठकर नी को है ना ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं. ऐसे आप इधर भी बैठे बैठे भी कर सकते हैं. यहाँ पे पूरी सपोर्ट देना आपको. अगर चेयर पर बैठ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा. पैर को ऐसे स्ट्रेट करना बैठते हुए, फिर इसको नीचे करना, स्ट्रेट करना, उसको पीछे कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. अब डाउन कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. आप पीछे की साइड स्ट्रेच कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. नीचे कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5. चेंज. इसको है ना आप चेयर पर बैठते हुए कीजिए. अगेन 1. ऊपर पैर नीचे रखते वक्त नॉर्मल रखना है क्या, या नीचे की साइड नीचे प्रेस करना है? आपको नीचे बैठते हुए नॉर्मली रख सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगता है तो टोस को नीचे प्रेस करके हील को थोड़ा ऐसे उठाएंगे. ठीक है.
अगर आप चेयर पर बैठते हुए करते हैं ना, ये सारे आपकी नीज तक सब चेयर पर होगा, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अभी नीचे बैठते हुए इतना अच्छा नहीं होगा, फिर भी आप ट्राई कीजिए। यस, आप 1 2 3 4 5 ब्रीथ आउट डाउन। तो उसको नीचे प्रेस कीजिए, हील्स को आपको उठाना है तो थोड़ा सा राइज कीजिए। 1 2 3 4, जस्ट ब्रीथ आउट डाउन, रिलैक्स हो जाइए। इतना तक काफी है, बहुत ही ज्यादा है। आपको नी पेन के लिए ये सारे एक्सरसाइज रोज करेंगे ना, शायद तो आपको कुछ 15 to 20 मिनट्स लगेगा या तो 15 मिनट्स लगेगा। रेगुलर करना है, रेगुलर करने में क्या आपको डिफरेंस तो आपको लगेगा, एक वीक में ये लगेगा डिफरेंस। किसी को इसमें तो कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी, तो नी पेन के लिए, क्योंकि आजकल सबको वही कंप्लेंट है कि नी पेन है। अगर कुछ एक्सरसाइज करता है तो नी से साउंड आता है, अगर कोई और हिप जॉइंट नी जॉइंट से क्रैकलिंग साउंड आती है, तो ऐसे बहुत कुछ है ना।